सोलर पैनल्स और विंड मिल्स कहीं ना कहीं हम सब ने देखे होंगे। इतना भी पता होगा कि सोलर पैनल्स सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और विंड मिल्स विंड एनर्जी बनाने के काम आते हैं। पर इंडिया इनको बनाने की रेस में कितना आगे पहुंच गया है, चलिए जानते हैं इन अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया ऑन द राइज। Well, India's renewable energy sector is witnessing remarkable growth. In fact, India has one of the fastest rates of growth in the renewable energy sector among all the large economies of the world. Recently, in a Rajya Sabha session, Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, informed about India's current status and position in the sector. He said India's installed renewable energy capacity has increased by 165% over the past decade, rising from 76.38 gigawatts in 2014 to 203.1 gigawatt in 2024. Not only this, we currently stand at 4th position globally in terms of renewable energy capacity, and in wind power capacity we stand at 4th position. साथ ही केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए सिर्फ चॉइस नहीं रही बल्कि इंडिया की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी हो गई है। तो हम इस सोलर एनर्जी से कितनी बिजली जनरेट कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल टोटल जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी में से 5.8% इलेक्ट्रिसिटी हमने सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की। ऑल्सो सोलर्स कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5% in 2015 to 5.8% in 2023. Talking about India's own targets in the sector, there are few. Firstly, India aims for 500 gigawatt of renewable energy installed capacity by 2030. Another aim is to achieve 50% cumulative electric power installed by 2030 from renewables and achieve net zero carbon emissions by 2070. India also aims to reduce the carbon intensity of the nation's economy by less than 45% by the end of the decade. Union Minister Prahlad Joshi also informed the Parliament that for the development of the sector, the budgetary allocation of the ministry has almost doubled from rupees 10,000 crores last year to more than 20,000 crores this year. So what do you think? Do you think these targets can be achieved in the future? Share your views in the comment section and see you in the next episode. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.